Hello friends, in this video I am going to cover you the concept of UML diagrams, right? In case you want to learn something more about the UML diagram, please go for the subscription and viewing of this full video. And one by one I will clear you the basics. But in case you want to go for the detail, I will provide you a number of videos based on the UML diagrams, right? Let's start with the UML. UML is Unified Modeling Language, right? UML, it's a language that is used to model, right? It is used to model the software solution, application structure, system behavior and business process. मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन डिजाइन करने के लिए, एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर समझने के लिए, एज वेल एज सिस्टम का बिहेवियर एंड बिजनेस प्रोसेस समझने के लिए. ठीक है, इट्स अ इन शॉर्ट इट्स अ लैंग्वेज यूज फॉर डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स इसको हम यूज कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं फॉर डिजाइनिंग एनी सॉफ्टवेयर. ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर, वी से इट इज अ लैंग्वेज. एनी आइडिया व्हाट अ लैंग्वेज इज? एट लीस्ट व्हाट, in case something is a language, we say it is the collection of rules. That means rules are fixed according to which we have to work. For example, my name KAMAL is a valid in English or it's a valid in any programming language. But in case if I go for KAM_AL, is this valid in English? No. So it's not valid in English. But is this valid in any programming language? Yes. We can use KAMAL or KAM_AL in C, Java, Python, any programming language we can use. So on the same sequence, UML is a collection of rules for designing, for modeling the systems, right? Whenever we go for the UML, so UML is full of diagrams. Reason being, we are going to use it for designing, right? So UML provides the support for 14 different diagrams, right? So we says UML provides a rule for 14 different types of UML diagrams, जिनको हम यूज करते हैं किसके लिए? डिजाइनिंग के लिए. किसको? मॉडल को, right? As well as the behavior, right? We divide UML diagram into two broader categories. One is structural, another is behavioral. Whenever we go for the structural, what does it mean? Structural diagram shows the diagram, or structural diagram shows the things in the modeled system. What do you mean by things? Things are static, fixed, right? They can be the objects or they can be the parts of any system, right? For example, in case of we want to design the software for library, so what do you feel that comes under the things? Books, students, members, employee, they all are the things, they all are the object. So the structural diagram shows the things in the model system, right? Whenever we go for the behavioral diagram, they show the working, they show the functioning, right? And whenever we are going for these two, what we say is these are the two that are further collection of these diagrams, seven diagrams, right? Whenever we go for the structural, structure consists of class diagram, object diagram, component diagram, package diagram, profile diagram, deployment and composite structure diagram. While in case we go for the behavioral, it consists of state machine diagram, communication diagram, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, timing diagrams and interaction diagram, right? The most useful structural diagram is the class diagram and the most useful behavioral diagrams are the use case diagram. In case you want to learn the detail, please wait for my next videos. Okay, let's go for the basics of class diagram. What a class diagram is? Class diagrams are the main building block of any object-oriented system. That means, as we all know, the concept of classes comes whenever the concept of object-oriented concept is there,
right? So without object oriented concept, classes are not there, right? So class diagrams are the main building block of any object oriented solution, right? It shows the classes in a system, attribute and operations of each class, and the relationship between each class. I think this is a sufficient statement. Whenever you say what a class is, class contains the name of the class, attribute in the or feature in the class, or the member variable in the class, and then the third one is the functionalities or methods or member function of the class, right? So whenever you talk about a class, what a class is a collection of name, feature and functionality, right? But that is about a class. But whenever we talk about the class diagram, तो क्या extra हो जाएगा? Multiple classes and how they are connected and how they are related, right? For that we are writing here different type of arrows are there. Of course, for the detail of this, wait for the next videos, right? This is a very simple example for the class diagram in which we have created multiple classes. For example, हमारे पास एक customer class है, order class है, product class है और stock class है. और इन सारी classes में ही क्या है? Class का name है, feature है और function के नाम है. Class diagram do not deal with the logic of the functions, right? They are just containing the name, right? इतना हो गया, classes होगी. एंड उसके बाद क्या है हमारे पास? ये एरोज हैं, मल्टीपल तरह के एरो यूज होते हैं जिनका कोई खुद का कुछ मीनिंग है, राइट? और मीनिंग इज फिक्स्ड, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं theoretically as well as we are with some tools, right? For tool we can go for, the tools are in the proprietary software as well as the open source. Proprietary, the tool is rational rows, right? And for the open source we are with the tool Umbrello, UMBRELLO, right? For the detail again I will suggest you go for my next videos. Next, if I talk about the component diagram. A component diagram displays the structural relationship of component of a software system. मतलब अगर एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, right? Are they the classes? No. What they are? They are the components. They interact with each other, right? For that हमारे पास क्या है? Component diagrams है. These are mostly used when working with complex system with many components. ठीक है, कंपोनेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग इंटरफेसेस. मतलब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड कंपोनेंट? क्लास में क्या है, एक क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, राइट? लेकिन उस ब्लूप्रिंट के साथ जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो दे आर विद द इंटरफेस यूजिंग विच दैट क्लास कैन मेक द इंटरेक्शंस. ठीक है, जिसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम हमारे पास ये है, कंपोनेंट डायग्राम, जिसमें मैंने करा क्या है, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर और अकाउंट, ये हमने क्या करी है, चार कंपोनेंट बनाए. और उन चार कंपोनेंट में क्या है, ये एक क्लास है और ये एक इंटरफेस है. ठीक है. नेक्स्ट, इफ आई गो फॉर द डिप्लॉयमेंट डायग्राम, राइट? हाउ योर सिस्टम इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, इट डील्स विद दैट, राइट? अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम shows the hardware of your system and the software in that hardware. Deployment diagrams are useful when your system, when your software is deployed across multiple machine. How your system is going to be deployed? For example, in case of any client server system, what you are with, some part of the software, some part of the system is at the client level and some is at the server level, right? So then what we need a deployment diagram, and the example is this one, where what we are doing, we are providing the three blocks. First is a web server, another one is a device, another one is a database server, right? Or device in the sense application server, and another one can be the mainframe computer. What they are consisting of, deployment diagram deals with all this. Next, we come to the object diagram.
Everybody know, I hope, the difference between the class and object. What a class is? Feature and functionality. Collection of feature and functionality. But whenever we go for the object, what object means? Object does not contain the functionalities. What it contains? It contains the feature with some specific values. That's what the object diagram consists of. So if I go for the definition, object diagram sometimes referred to as instance diagram, right? तो कई बार अगर हम इसको लिए हम इंस्टांस डायग्राम, क्योंकि ऑब्जेक्ट आर द इंस्टांसेस ऑफ अ क्लास, राइट? तो हम इंस्टांस डायग्राम भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? दे आर सिमिलर टू क्लास डायग्राम, ठीक है? लेकिन उसमें क्या है? दे ऑल्सो शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, बट दे आर यूज रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स. चलो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल में हमने क्या किया है? कस्टमर 1 किस तरह का एग्जाम्पल, किस तरह का ऑब्जेक्ट है? कस्टमर क्लास का. उसके बाद ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, व्हाट दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ऑर्डर. अब इन सारों में ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास फीचर है उनकी वैल्यूज हैं. कस्टमर आईडी इज 001, कस्टमर नेम इज something, customer phone is something, right? On the same pattern, order contain the value for the feature, right? And how they are connected, of course, wait for my next videos. Next, if I go for the package diagram, I hope you know what a package is. Package is a collection, right? In case you are clear with Java, the concept of packages are there. Java dot land, java.io, java.net, java.sql. What they are? They are the packages. On the same pattern, if I say I want to create a software and into which I want to break down the system into the subsystem based upon their functionality, right? So the package diagram are the most useful diagram, right? इसमें क्या है? As the name suggests, a package diagram shows the dependency between different packages in a system. तो यहाँ पे क्या है? जो multiple packages हैं, how they are connected, how they are dependent upon each other, right? For example, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ? 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ. वन इज अकाउंटिंग, अनदर इज इनवॉइस, थर्ड वन इज एचआर. ऑन द सेम पैटर्न जैसे जावा में हमारे पास क्या है? java.lan, java.io, java.sql. तो they contain the functions, they contain the functionality related to them only. So same is here. Accounting contain everything related to accounting. Invoice contain everything related to invoice. HR contain everything related to HR. Right? So the package diagrams are again the structural diagram. Next one comes the profile diagram. Profile diagram is the diagram that was introduced in UML 2 only. This is a diagram type that is very rarely used. Right? So most probably I will not go for its detail in my videos. But yes, for the basics, this is the example, profile diagram. Next come the structure, composite structure diagram. Composite structure, as the name suggests, it is a structure diagram. It is the diagram for the structure, but it is composite in nature, right? So it shows the internal structure of a class. For example, this one, what a school is. School consists of student and teacher. This is a very simple example of the composite. Again, they are also the lesser useful diagrams, UML diagrams. Next, if I go for the behavioral diagram, the very simple or the very first example of the behavioral diagrams are the use case diagram. And this is the diagram that are the most useful, that give us the picture based upon the scenarios. For example, in case I want to design the software for library, into which a number of scenarios can be there. For example, I want to get the book issued to me. तो मैं क्या करूँगा? I will go for one of the use case. ठीक है, अब उस यूज केस में मैं क्या करूँगा? अरे बुक लेने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए,
मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा, मेरे अकाउंट में बुक्स होनी चाहिए, बुक अवेलेबल होनी चाहिए, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या करा है, एक ट्रैवल एजेंसी को, जिसमें हमारे पास क्या है, एक ट्रैवल एजेंट क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं, कस्टमर, एयरलाइन कंपनी, हाउ दे आर कनेक्टेड टू द डिफरेंट मेथड्स, ये शो कर रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स यूज केस डायग्राम में क्या है, these are the use cases, these are the actor, these are the relationship between the use cases. Of course we will go for their detail when to use what. Next come the activity diagram. Activity diagram represent workflow in a graphical way. That means activity, for one specific activity, if I says what will be the flow, how the work will, how the system will move forward. ठीक है, they can be used to describe the business workflow or the operational workflow. So if I says activity diagram shows the flow only, how they shows it, using the activity diagram. These are the start of the activity diagram, this is the end of the activity diagram, and what these are the different activity. This is the decision maker, right, that is used for the making the decision in the activity diagram. Next come the state machine diagram. Whenever we go for the state machine diagram, we must be clear with the states, in how many states, in what different states the system can go, right. So let's go for the definition. State machine diagrams are similar to activity diagram, right, जिसमें हमारे पास notations अलग होती हैं, right. They are also known sometime as the state diagram or state chart diagram. स्टेट मशीन डायग्राम, स्टेट डायग्राम एंड स्टेट चार्ट डायग्राम, राइट। अगर तीनों में से कभी भी कोई पूछा जाता है तो आपको सेम ही बताना है। ठीक है, दीज आर वेरी यूजफुल टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एक्ट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, राइट, जिसमें मैंने क्या करना, एक नई गेम शुरू करता हूं। ठीक है, या तो विन स्टेट होगा या लूज स्टेट होगा, इन दोनों में से क्या कर सकता हूं मैं, विन स्टेट से लूज में जा सकता हूं, लूज से विन में जा सकता हूं, एंड गेम एंड। ठीक है, इन दोनों इन सिंबल्स का कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, दीज आर द स्टेट्स, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड दीज आर द फ्लो। नेक्स्ट कम द सीक्वेंस डायग्राम. Sequence diagrams in UML show how objects interact with each other and the order those interaction occurs. अगर मैं बोलूं कि दो ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं और किस ऑर्डर में काम करते हैं, उस सारे को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास क्या है, सीक्वेंस डायग्राम, राइट. तो इस अगर डायग्राम की बात करें तो इसमें टाइमिंग इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल, this is the object 1, this is the object 2, of course of some classes, class A, class B. This is the timeline. तो सबसे पहले क्या होगा, object 1 will create the new object, उसको एक मैसेज पास करेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो मैसेज रिटर्न होगा, उसे फिर मैसेज 1 पास करेगा, मैसेज 2 पास करेगा. ओहो, this is the wrong way. A flow is there from object 1 to object 2, object 2 to object 1. This one is the correct one. This one is the correct one, but here we have gone wrong. Some rules are there to create the sequence diagram. Of course, we will discuss them whenever I will go for their detail. Next comes the communication diagram, right? In UML 1, they were also called the collaboration diagram. So, if somebody says, I am discussing the collaboration diagram, or I am discussing the communication diagram, then the things are same. ठीक है? Communication diagrams are similar to sequence diagram, but the focus is on message passed. हमारी जो पहले वाली डायग्राम थी उनमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ हमने टाइमलाइन के ऊपर हमने क्या करा था, सीक्वेंस दिखाया था. लेकिन यहां पे क्या है, मैसेजेस आर इंपॉर्टेंट एज वेल. फॉर एग्जांपल, जस्ट सी, स्टाफ मेंबर, क्रिएट कॉन्टेक्ट, राइट. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स and this is a sequence and how they communicate using these messages. Next come the interaction overview diagram. Interaction overview diagrams are similar to activity diagram, right? While activity diagram shows a sequence of process, interaction overview diagram shows a sequence of interaction diagram.
तो अगर हम यहां पे बात करें हमारे पास क्या होगा, यहां पे मल्टीपल इंटरेक्शन डायग्राम कैसे कनेक्ट होती हैं, राइट। तो उन सारे को जोड़ के क्या हमारे पास जो बनती है डायग्राम उसे बोलते हैं इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम। फॉर एग्जांपल दिस, अब यहां पे क्या है, दिस इज वन टाइप ऑफ डायग्राम, दैट इज सीक्वेंस डायग्राम, दिस इज स्टेट चार्ट डायग्राम, राइट। इन सारों को कलेक्ट करके हमारे पास क्या बना, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग, क्योंकि वो भी तो इंटरेक्ट कर सकती है ना आपस में। देन कम द टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम्स आर वेरी सिमिलर टू द सीक्वेंस डायग्राम, मतलब टाइमिंग डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, सीक्वेंस और टाइम। ठीक है, तो दोनों टाइम फ्रेम और टाइमिंग स्ट्रक्चर का यूज करती हैं। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन टाइम फ्रेम। ऑफ कोर्स सीक्वेंस में भी यही था, ठीक है, बट इफ देर इज मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज इन्वॉल्व, अ टाइमिंग डायग्राम इज यूज टू शो द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम। मतलब अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे यूज होते हैं तो वी डू नॉट मेक द यूज ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम, वी मेक द यूज ऑफ टाइमिंग डायग्राम। This is the example, right? And that's all at least about the basic of the UML diagram. For their detail, I will suggest you to please wait for my next videos. Thank you.